Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Parliament passes Banking Regulation Amendment Bill 2020 and Essential Commodities Amendment Bill. Equity benchmarks decline for the fourth session in a row. Sensex closes below 38,000 mark. Nifty settles below 11,200 level. And Asian shares fall amid possible delays in expanded US stimulus and increasing COVID-19 cases. संसद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज हुई गिरावट। सेंसेक्स 38,000 के स्तर से नीचे आया। निफ्टी 11,200 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसला। और दुनिया भर में कोविड-19 मामले बढ़ने की आशंका और अमेरिका में प्रोत्साहन उपाय विस्तारों में देरी होने की संभावनाओं से एशियाई शेयर बाजार में भी आज हुई गिरावट। Parliament has passed the Banking Regulation Amendment Bill 2020, with the Rajya Sabha passing it today. The bill amends the Banking Regulation Act 1949, which regulates the functioning of banks and provides details on various aspects such as licensing, management and operations of banks. It will replace the Banking Regulation Amendment Ordinance, which was promulgated in June this year. The bill allows Reserve Bank of India to initiate a scheme for reconstruction or amalgamation without imposing a moratorium. If a moratorium is imposed, in addition to the existing restrictions, the banks cannot grant any loans or make investments in any credit instruments during the moratorium. Udayan, would you explain the regulation, the banking regulation that has been passed today, particularly which allows the Reserve Bank of India to initiate a scheme for reconstruction or amalgamation without imposing a moratorium? Well, Rajesh, there are two aspects of the banking-related legislation that you talked about. One is, of course, about cooperative banks. Now, you might remember the PMC case, which I think happened last year. And there was this whole grief that came to the depositors. Now, the whole requirement that has been increasingly being felt was to protect the depositors of cooperative banks. And generally, if cooperative banks get into some kind of trouble, then RBI is able to play a decent role. And the cooperative bank sector actually becomes a little more regulated than it was. So that things don't fall between the stools as we have seen in one or two cases. So even as a downturn sort of impacts our economy, the cooperative banks and especially the depositors out there, that is an area where there could be stress could be felt. Banking sector in any case is feeling the stress. Now this will actually reinforce the whole scene out there and protect the customers out there, especially the depositors. So this is primarily what is being done. The other, of course, is the steps that were done today was to sort of protect,
bankruptcy sort of proceedings, being initiated against companies of certain tickets, who have taken loans of certain ticket sizes. But that's another aspect. But the one that you're talking about, of course, is deals with cooperative banks. But overall, if you see all the legislation, especially economic legislation, have been enacted to protect and gear up to respond to the current economic challenges that the country is facing. Okay. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संसद से कुछ और महत्वपूर्ण जो कह लें विधेयक पारित हुए हैं उन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। संसद ने आज आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी है, जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केंद्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहिब दादाराव ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आजादी मिलेगी। उदयन, हम आपकी प्रतिक्रिया इस महत्वपूर्ण कह लें कि जो विधेयक आज पारित हुआ है उस पर समझना चाहेंगे। पहले 2 कृषि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कह लें विधेयकों को मंजूरी मिली है संसद से और अब आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। किस तरह का कह लें कि परिवर्तन आएगा देश की विधि व्यवस्था में और आम जनजीवन में, खासतौर से कृषि क्षेत्र को देखते हुए? मनोज, अगर आप देखें ये जो पीछे जो आपके लेजिस्लेशन पास हुए हैं, तो उसी की श्रृंखला में, उसी के कॉम्बिनेशन में ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ विधेयक जो हैं ये इकट्ठे काम करेंगे। ये सिंगल आप अगर एक को पारित करते तो उससे काम नहीं बनता, 3 को इकट्ठे करना पड़ेगा और वही किया जा रहा है। एंड जैसे मैंने पीछे भी कहा जब राजेश ने पूछा था, तो ये भी हमारे जो अभी करंट जो स्थिति है इमीडिएटली तो उसके रिस्पॉन्स में है, पर इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल चेंज कर जाता है जो एपीएमसी से जुड़ी हुई जो विधेयक थी उसके साथ मिलके ये करती है। पर राइट नाउ इस वक्त जो है ये जो दिक्कत है वो जैसे आपके इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स में एक डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कभी कहीं पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे डिस्ट्रप्शन हो जाता है, फूड सप्लाईज का भी डिस्ट्रप्शन होने का, फूड या दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के डिस्ट्रप्शन होने का खतरा बना रहता है। और इसलिए क्या है कि आप अगर ये जो वोकल फॉर लोकल की बारे में बात हो रही है, जो लोकल एरियाज में आपको मार्केट्स मिल जाए, आप एक ही मार्केट प्लेस पे डिपेंडेंट ना रहें, उस चीज का इंतजाम किया जा रहा है। पर मनोज, एक कई बात यहाँ पे जब बातचीत हो रही है कृषि विधेयकों के बारे में, काफी लोगों का चर्चा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह बिग बिजनेस को ला रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें होती हैं आप एक चीज को भूल जाते हैं, जो लोग इस तरीके से चर्चा करते हैं, कि जो हमारे जो ई कॉमर्स हो रहे हैं, जो डिजिटल बिजनेसेस हो रहे हैं, जहाँ पे आपने डिजिटल मार्केट प्लेस है, जो कि हमने देखा है कि इस जो लॉकडाउन के वक्त सीधे फार्मर से उपभोक्ता के पास आ रहे हैं, कृषि से सीधे उपभोक्ता के पास आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है, बहुत बड़ा बिजनेस एरिया वो खुलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और जैसे वो रेडी होगा तो प्राइवेट सेक्टर, अगर मान लीजिए एक स्टार्टअप चालू हो जाता है और वो कामयाब हो जाता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और इससे क्या होता है कि सरकार के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा सा कम होने का चांस पड़ जाता है और कृषक और उपभोक्ता दोनों को फायदा होता है। तो इस टाइप की चीजें जो हैं, जो जैसा आपने पूछा, ये खुलते चले जाएंगे अगर ये कामयाब हो जाता है ये कदम। The Parliament has also passed the Companies Amendment Bill 2020 with the Rajya Sabha clearing it today. The Lok Sabha has already approved the bill. The bill removes the penalty and imprisonment for certain offences made in violation of the legislation. In addition, it also reduces the amount of fine payable in certain offences under the ambit of legislation. The bill empowers the central government to allow certain classes of public companies to list
classes of securities in foreign jurisdictions. आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज गिरावट हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख और आर्थिक स्थितियां फिर से बहाल होने की आशंकाओं को लेकर निवेशकों के बीच प्रतिकूल असर देखने को मिला। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 300 अंक यानी 0.79% की गिरावट लेकर 37,734 पर बंद हुआ, यानी 38,000 के स्तर से एक बार फिर नीचे आ गया सेंसेक्स। दूसरी ओर निफ्टी भी 11,200 के स्तर से नीचे पहुंच गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 97 अंक यानी 0.86% गिरकर 11,154 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो यहां भी बिकवाली का आलम था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.7% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% की गिरावट हुई। Equity benchmarks today closed with losses under selling pressure for the fourth session on the trot. Domestic indices fell as wary investors took money off the table amid concerns over economic recovery and weak global cues. Traders said weakening rupee and stretched valuations in frontline stocks further weighed on risk appetite. The 30-share BSE Sensex settled 300 points or 0.79% down at 37,734. Similarly, the broader NSE Nifty fell 97 points or 0.86% to finish at 11,154. On the other hand, the broader market at BSE underperformed the Sensex. The mid-cap tumbled 1.7%, while the small-cap ended 1.61% down. Maruti was the top loser in the Sensex pack, shredding 2.8%, followed by L&T, IndusInd Bank, Axis Bank, ONGC, HDFC, Reliance Industries, Asian Paints and Kotak Bank. IT stocks led the gainers chart with HCL Tech, TCS and Tech Mahindra spurting up to 2.4%. Other winners included Sun Pharma, ICICI Bank and Ultratech Cement. BSE Industrials, Capital Goods, Oil and Gas, Energy, Realty and Auto indices lost as much as 2.5%, while IT and Tech indices finished higher. Udayan, are you there? Yeah, right. Yeah. Okay. The financial stocks today, particularly the banking and financial stocks, fell after it was learnt that several global banks moved a large sum of allegedly illicit funds over a period of nearly 2 decades, despite red flags about the origins of the money. The reports were based on SARS, the suspicious activity reports, which we all know of now, filed by banks and other financial firms with the U.S. Department and Treasury Financial Crimes Enforcement Network. This news is not going to go away soon, Udayan. Perhaps there could be more skeletons that will tumble out of the closet. What do you say? Will it be impacting the overall sentiments of the investors for a long time to come? Well, I mean, if investigations are happening, then you'll have sort of some news coming out. But Rajesh, I wanted to point out all over the world, banking regulators and the governments are functioning in very, very close concert, and I mean they're working together. In US, you've got the FATCA, and basically to protect against terror and other kind of financing, drug financing, to protect and money laundering and other sort of crimes. So there's a lot of collaboration that's happening. So some of it, of course, is because of this better or heightened surveillance that's happening, and that is going to keep increasing over a period of time because, Rajesh, we are also digitizing our banking operations to a very great extent. It's getting more and more digitized. So you will find some of these things coming out. But Rajesh, overall, I would say that how we perform, how things pan out on
the current pandemic scene, especially things like vaccines, medicines, things like stimulus. These are the things that will be the big factors that will be determining how we look ahead in the months to come. Especially in the next 30, 40 days, any information, any development related to vaccines will change markets, will definitely influence markets in a very significant way. उदयन जी, जो घरेलू कह लें कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका आज जो संसद से विनियमन संबंधी, बैंकों के विनियमन संबंधी विधेयक पारित हुआ है, उसका क्या असर पड़ेगा लघु यानी समय को देखते हुए, और दीर्घकालीन इसका क्या असर रह सकता है? मनोज, इसका ये जो कदम उठाया गया है वो ये सब सरकारें विदेशों में, अलग अलग देशों में ये प्रोटेक्शन की जा रही है कि आप जो प्रेशर में है बिजनेसेस, जो स्पेशली स्मॉल बिजनेस, छोटे और लघु और मझौले उद्योग जो हैं, उनका जो प्रेशर है, तो आपने एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि आपने कहा कि इससे ऊपर अगर लोन है वहां तक होगा, आप इसको हम इस पीरियड तक हमने कहा है, इससे भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये कैश फ्लो और रेवेन्यूज ठीक से चालू नहीं होगा मनोज, लोन की जो अदायगी है, वो वापसी है, उसकी जो किस्तें भरी जा रही है या रिपेमेंट है, उसको ईमानदारी से उम्मीद करना वो सही नहीं है। क्योंकि अगर सिचुएशन ही ग्राउंड, मान लीजिए मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे को लेबर नहीं मिल रहा है और मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, जो कि कई जगह में ये सिचुएशन है, तो फिर ये अनफेयर हो जाता है। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो अजम्पशन ये होता है कि जिस तरीके आपका बिजनेस बहुत साउंड है, पीछे आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिमांड है, और उस आगे के रेवेन्यू से, पैसे जो आप कमाएंगे उससे आप लोन चुकाएंगे। जब ये इस टाइप का पैंडेमिक होता है तो ये सारे जो अजम्पशन है, एक तीसरा एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसमें आपका ना बैंकिंग सेक्टर का या सरकार का किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी ढिलाई देनी जरूरी है, क्योंकि लोन आपको एक फ्रेश कंपनी को तो मिलता नहीं, जब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है तभी आपको लोन दिए जाते हैं। तो एक अच्छे खासे कंपनी को सीधे आप कटघरे में खड़े करेंगे एक इमरजेंसी सिचुएशन में, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि उद्यमी जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए चारों तरफ सारी सरकारें इस टाइप की ही कदम उठा रही हैं। हमारे भारत में अच्छी बात है कि हमने ये कदम उठा लिया। So then the BSE Sensex settled 300 points, down primarily. One aspect that we discussed was the financial stocks tumbled today. The other point is the surge in the COVID-19 cases that you mentioned a while back. In fact, they witnessed significant selling pressure as a rise in coronavirus cases at home and abroad. Dented the investors' sentiment. The other reason, of course, was the profit booking. The Indian benchmark indices succumbed to profit booking. It was in sync with the global cues. That's being mirrored all across now, which turned negative following surge in COVID-19 infections in various countries, including in Europe. So vaccine is far off. It seems in such a scenario, investor sentiments will continue to be dented, and will profit booking continue to happen in the coming days? Or are you expecting a market correction which is inevitable? Rajesh, on an overall in a larger picture, say about 6 months, you'll have these kind of things happening. 3 steps forward, 2 steps backward, or 3 steps ahead and 1 step backward. So this zigzagging will keep happening. Of course, you're very right. There's a lot of profit booking, and because of the expiry of contracts and all that, so people try to take money off the table. So that, of course, is there, but that is exactly what's going to keep happening. There's a lot of recovery that has happened, Rajesh. There's a lot of information that's coming. We're just talking about activities going up. But Rajesh, the problem is, apart from agriculture, where a lot of things are being done, and typically, your supply chains are not that sensitive out there. From the time a farmer sows and produces something on his field to the time it comes to the market, you don't have so many elements. But think about an automobile or something like that, even bicycles, right?
So there are a lot of parts that come from here and there, and you need labor. So what's happening out there is that, up to the point of time, you will hit a limit of, your growth is going to get constrained. You're going to keep recovering, and it's going to be slow, and it's going to be uneven across sectors. Like, for instance, in case of hospitality and entertainment, not much action is happening. Film halls are not opened up, so you can't go. So that business is gone, So, so services are going to keep suffering. So what's going to happen is you're going to see agriculture and industry to a certain extent keep performing. And as and when you get positive data coming in, positive information, the markets are going to be okay, or they might move up a little bit. Whenever you're going to get a negative sort of information, whether it's from India or abroad, again, there is going to be that reaction. So just 3 steps forward, one step backward kind of a thing will keep happening, Rajesh, unfortunately, for some time now. उदयन, हम आपका ध्यान ऑटो सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे और वहां की स्थितियों को समझना चाहेंगे, खासतौर से आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा, इस महीने के अंत तक संभावित है कि नई स्क्रैप नीति ऑटो सेक्टर के लिए घोषित हो जाए, जिसके तहत उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि जो स्क्रैप यानी पुरानी गाड़ियों का होगा, उसे नई डिमांड बनेगी और जो अपनी गाड़ियों को स्क्रैप कराएंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। किस तरह का परिवर्तन होता दिख रहा आपको ऑटो सेक्टर में? राजेश, मनोज, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, और ये अमेरिका में, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अप्लाई किया गया था 2009 में। इसको स्कीम को कहा गया था कैश फॉर क्लंकर। तो क्लंकर मतलब पुरानी गाड़ी, तो पुरानी गाड़ी को क्लंकर बोला जाता है। तो कैश फॉर क्लंकर जो है वो प्रोवन है, वो बहुत इफेक्टिव होता है, और पुरानी गाड़ियां हैं। और इसके 2 फायदे हैं। ये जो हम अगर स्टील अगर इंपोर्ट करते हैं, दूसरी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, तो वो यहीं पे जो पुरानी गाड़ियां हैं उसी में से इस्तेमाल करके हम एक तो वो सेव कर सकते हैं इंपोर्ट कॉस्ट। दूसरी है कि आपकी जो कार फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मनोज। तो वहां पे वो वॉल्यूम्स बढ़ सकती हैं, और त्योहार के वक्त ये एक अच्छा चीज हो सकता है। जैसा और हम जानते हैं, मनोज, की ऑटो इंडस्ट्री जो है बहुत सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को जोड़ के रखती है, उसके कस्टमर हैं, तो उनको भी वो खींच के आगे लेके जा सकती है। तो ये काफी चीजें जो हैं इकट्ठी आपको आगे लेके चलेंगी। पर वहां पे भी, मनोज, दिक्कत वही है। वहां पे वो लेबर की दिक्कत है, सप्लाई चेन की दिक्कत है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। पर ये एक काफी अच्छा है। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते रहते हैं दिल्ली और दूसरे शहरों में पोल्यूशन की दिक्कतें होती थी, बिकॉज लोगों के पास पुराने मॉडल्स थे। तो क्योंकि अभी हमने इतना बड़ा चेंज हम कर रहे हैं, और हमारे क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो एक झटके में हम वो पोल्यूशन वाली जो गाड़ी से जो पोल्यूशन होती थी उसको रिप्लेस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और कैश फॉर क्लंकर ये वही काम करेगा। वो इस स्कीम का कोई और नाम हो सकता है, पर अमेरिका में इसे कैश फॉर क्लंकर बोला गया था 2009 में। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 20 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 58 पैसे के स्तर पर आ गया। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला इंडेक्स आज 0.04% कमजोर हुआ, 93.61 पर आ गया। ध्यान दें एशियाई शेयर बाजारों पर, तो एशियाई शेयर बाजारों में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.4% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.3% की गिरावट हुई। हांगकांग का हिंग सेंग 1% नीचे आकर बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.9% लुढ़क गया। जापान के शेयर बाजार में आज कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.4% ऊपर बने हुए थे, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.9% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Wall Street's main indices tumbled to their lowest in nearly 7 weeks yesterday. US stocks fell as worries about fresh coronavirus-driven lockdowns spilled over from Europe. The Dow Jones Industrial Average plunged 1.8% and the S&P 500 declined 1.2%, while the Nasdaq Composite Index fell marginally by 0.1%. Udayan, quickly, your views on the possible delays in expanded US stimulus
on which the Asian shares today reacted, and of course the lockdowns in Europe. Will this all not put further pressure on the equity markets in India as well? They will. But Rajesh, stimulus is being given in other countries as well. And let's not forget the stimulus that was given in the first time round, like the doses of stimulus, that would put in an enormous amount of money in the pockets of Americans. So yes, it will. It's like a drug, I hate to put it this way. No, once or a steroid, if you don't keep taking it regularly, the effect wears off. Yes, the effect will start wearing off, but I'm sure the American legislatures they'll get back into action and will action up something. Moving on, the oil prices today rose as analysts took the view that renewed lockdown restrictions would have only a limited impact on fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42 per barrel, while WTI crude prices were around $39.60 per barrel. Don't you think, though, what I just read, that the lockdowns will have limited impact on fuel demand, will this not impact the price of oil in the coming days? Well, Rajesh, one of the things that we need to remember is every oil producer is cutting down supply like mad. I mean, it's very different from what we saw, say, in 2018 or so, when, it was like a nosediving, then it went up, crossed the roof, hit the roof. People have been cutting supplies, and they'll keep cutting supplies and try to match the demand. So they'll keep it somewhere around $40, $45 Rajesh. That's my sense. They won't let it go too high because things are not so good at the moment. Once things, start improving, things will get better. Countries like China and others, China is possibly the only large economy set to expand this year in the third quarter and very significantly. There, the impact will not be so much in terms of people who are selling oil. But in other countries, things are not that, gung-ho. So people will keep cutting supplies, at a general level and try to manage. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना हुआ सस्ता और चांदी की चमक फीकी पड़ गई। सोने का मूल्य 672 रुपए घटा 51,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी 5,781 रुपए लुढ़ककर 61,606 रुपए प्रति किलो पर फिसल गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्य में नरमी देखने को मिली। ये $1,900 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। हालांकि चांदी अपने पूर्व स्तर $26.12 प्रति औंस पर बनी रही। उदयन, क्या सोने और चांदी की जो चमक थी वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ साथ अपने यहां भी धूमिल पड़ती नजर आएगी? देखिए मनोज, ऑलरेडी अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है गोल्ड ने एसेट क्लास में, पर हमें ये याद रखना पड़ेगा, जब आपके फाइनेंशियल एसेट, जब बॉन्ड, शेयर, स्टॉक जो हैं, ये जब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस इन पे कम हो जाता है, या आपकी करेंसी पे, मतलब जो ये तो करेंसी के साथ डिनोमिनेटेड होते हैं ना, शेयर को आप खरीदते बेचते हैं, रुपयों से बेचते खरीदते हैं, तो करेंसी के ऊपर आपका जब भरोसा चला जाता है, कम हो जाता है, तो तब आप सोने की तरफ जाते हैं। तो रिवर्स जब होने लगता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाती है, लोगों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो नेचुरली आप सोने की तरफ कम जाएंगे। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बना रहता है, और ये अगर हम दिमाग में रखें तो अब हमें ये सोने के बारे में समझने में हमें आसानी होती है। Your quick view on the coming next 3 days, very, very brief. What do you expect will happen? Well, I would imagine it will be more of the same, Rajesh. Some of the factors that have been sort of operating, they are going to do, and ऐसा ही उत्तर बना है। Yeah, so that's it's not something out of the ordinary that I'm expecting. You can expect more of the same. बस यही हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Dan. And before we close, a reminder of the headlines. Parliament passes Banking Regulation Amendment Bill 2020 and Essential Commodities Amendment Bill. Equity benchmarks decline for the fourth session in a row. Sensex closes below 38,000 mark. Nifty settles below 11,200 level. And Asian shares fall amid possible delays in expanded US stimulus and increasing COVID-19 cases. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.